And Siddhika, you revised all the groups that we learned yesterday. Mm, a little, sir. You did or you did not? I tried. You tried. Okay. Uh, I you had a should. hard time with it. Why you had a hard time with it? You're Just not memorizing them in order. just memorizing them on order. Okay. Fine. Today we are going to do it once again, so it is going to be easy, है ना? आज हम लोग एक एक करके हर एक ग्रुप को देख लेंगे. It will become easy for you guys. So before starting, have we done the concept of valency and valence electron structure of atom? Did you do valency and valence electron? Valency and valence electron. I don't think so, no? You have not done valency or valence electron. Fine. Let the topic concept of valency. Concept of valency. Okay. Now, whenever we are going to calculate the valency, first of all, valency can be one of two things. Valency can be one of two things. What it can be? It is going to be either the valence electron, the number of valence electron, or it can be 8 minus valence electron. It can be 8 minus valence electron. Now, any one of this can be valency, whichever is less. Will be valency. For example, let us take calcium. Calcium has atomic number of 20. So we are going to take the nearest noble gas before calcium is argon, which is having 18 electron. It is the noble gas number 3. So we'll start with 4s and 2 electron is remaining. So 4s2. Now in this case, we are going to calculate. Tell me what is the valence electron? How many valence electron do we have here? How many valence electron? Yes, yes, sir, correct. You have two valence electrons, and this is the valence shell, and the fourth shell is having how many electrons? You have to look at the shell, okay? Fourth shell is the valence shell, and how many electrons it is having? It is having 2. Okay, so valence electron is equal to 2, and 8 minus valence electron, it is going to be 8 minus 2, which is equal to 6. So which one is smaller, 2 or 6? Which one is smaller, 2 or 6? Tell me. Boliye, what happened, guys? Which is smaller, 2 or 6? 2, right? 2 is smaller. So 2 is going to be your valency. Understood this? Yes or no? Please tell me. Try a similar thing for fluorine. It has atomic number 70. Try it for phosphorus. Phosphorus के लिए कीजिए जरा. Atomic number of phosphorus is going to be 15, right? Do it for oxygen, which is having atomic number 8. And also do it for boron, which is having atomic number of 5. Fluorine, यासिर 1 2 3 4 नो गलत है यासिर गलत है यासिर ठीक से कीजिए उसका कोई शॉर्टकट नहीं है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी ही पड़ेगी और आपको वहां पे देखना ही पड़ेगा व्हाट इज द वैलेंस शेल और उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सो ऑन ठीक है इतना हड़बड़ी मत कीजिए
सिद्धिका, सारा आप लोगों से हो रहा है? Yes, sir, I'm doing it. What about you, Sara? Yes, sir. Okay. Martin, what about you? Yeah, doing so. नहीं. Sara, turn your mic on. Yes, sir. Now tell me, argon. Then, no, Yes. not argon. Neon. No, sorry. Neon. My bad. Neon. Neon. And then 3s2, right? 3p, Yes. 3p5. 5. What is the number of valence electron? 5. No, 7. No? 5 plus 2. Valence Yes, shell sir. third period. Third shell में आपके पास क्या है? 2 और 5 कितने हो गए? 7. And what will be Yeah. 8 minus valence electron? 8 One. minus 7 will be equal to 1. Which is smaller, 7 or 1? Okay. So we need to choose the smaller one. अरे भाई, ये देखिए हमने क्यों लिखा है, हम ये समझाएंगे आपको. Whichever Yeah. is less will be The value. valency. No, we have to tell the valency. Two more minutes, guys. Then I'm going to write the answers. हर्षा, आपसे हो रहा है? Yes, Yes, sir. Harsha. Done. Done. Okay, please tell the answers. नहीं, बोरॉन का फिर से देखिए सिद्दीका. बोरॉन का फिर से देखिए. Okay, sir. Others are fine. ठीक है, that's it. Okay, please see here. For phosphorus also we are going to take neon, then 3s2 and 3p3. So valence electron, it is going to be how much? 3s2 and 3p3 ना phosphorus. 3 2 5. हाँ ठीक है. Valence electron is 5. 8 minus valence electron is going to be how much? It is going to be 8 minus 5, which is equal to 3. So 3 is going to be my valency. For oxygen, I am going to do, we are going to have 1s2 से कर देते हैं इसमें, छोटा सा होगा. 1s2, 2s2, 2p4. So valence electron, it is equal to 6. 8 minus valence electron,
It is going to be equal to 8 minus 6, which is equal to 2. So 2 is the valency of oxygen. For boron, 1s2, 2s2, 2p1. Valence electron is equal to 3. So 8 minus valence electron will be equal to 8 minus 3 is equal to 5. In this case, 3 is lesser. That is why 3 is going to be my valency. Yes, sir. D का correct. सारा आपको समझ में आया? Yes, sir. Okay. Write this down. Let me know once you're done. Done. Done? Okay. Hit next. S block elements. S block elements. ठीक है. S block is composed of two groups. It is composed of two groups. How many groups? Two groups. ठीक है. और two से आप जैसे S जो S subshell होता है, the S subshell can have only how many electrons? It can have only 2 electrons. That is why two groups. D में होते हैं तो 10, तो D के हुए कितने? 10 groups. ठीक है. P के होते हैं कितने? P can hold 6, so it is going to have 6 groups. F में लेकिन ध्यान रखिएगा, F का बस एक ही ग्रुप होता है, द थर्ड ग्रुप. ठीक है. F क्योंकि अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में F की जगह कोई फिक्स नहीं है. If you see the table, the S block, P block and D block, it is completely composed. एक ही स्ट्रक्चर है और F उसके नीचे आता है. F का प्लेस कोई अभी पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं हुआ है. That is why S block it will have two groups because it has S subshell has 2 electrons. It is composed of two groups as S subshell, as each S subshell can have 2 electrons. ठीक है. It can have 2 electrons. Please see here. So what is the two groups? Group 1 elements. These are known as alkali metals. These are known as alkali metals. Okay. Now, why they are known as alkali metals? Please remember, metals because they have tendency to lose electron. Tendency to lose electron. Why they are known as alkali? Because they produce I should say they increase concentration of OH negative when added to water. Person में yes or no, please tell me. Alkali metals means tendency. Whenever I am seeing tendency, ऐसा नहीं है कि बस आप ये आएंगे और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चालू कर देंगे. No. If there is someone which can take electron, so metals can give electron. If there is someone who can take electron, so metal is going to give electron. Similarly, आपके पास होते हैं group 2 elements. These are known as alkaline earth metals. ठीक है. आपको ये पता है कि metals किसकी वजह से हैं, alkaline किस वजह से है, right? Because metals, because they also have a tendency to lose electron. And alkaline, why? Because they also increase the concentration of OH negative when added to water. Now, why it is known as earth metals? Because इसमें जो मैग्नीशियम है,
कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, these are found in earth's crust. ठीक है, इसके लिए आपको ज्यादा डिग नहीं करना पड़ता, यू कैन इजिली गेट दीज थिंग्स वेयर इन दी earth's crust, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम. That is the reason these are known as alkaline earth metals. Please write this down. Let me know once you're done. लिख लिया सबने? Yes, sir. Done? Yes, sir. Now let us type the group 1 elements and the group 2 elements. There you go back up. Make it. Please remember one thing. Whenever I ask, if you have not written, you should be the first one to say that I have not written. ठीक है? अब बाकी लोगों का इंतजार नहीं करेंगे, जब यस सर बोल दिया तो उसके बाद फिर बोलेंगे. ठीक है? Please write this down. Done? Yeah. Right now. ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या बोलते हैं इनको? इनको कहा जाता है, खराब हो गया, इसको चेंज करना पड़ेगा. बकरीद के बाद इंशाल्लाह आपके पास, हमारे पास नया कार्ड होगा. अल्कली मेटल्स. क्या बोलते हैं इनको? अल्कली मेटल्स. व्हाट आर द अल्कली मेटल्स? ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन बताएगा? बताइए. द नेमोनिक, हाउ आई सेड टू रिमेंबर इट, टेल मी गाइस. हर्षा, सिद्दीका, सारा, यासिर, काशिफ, कैसे याद करते हैं इनको? बताइए. ग्रुप 1 एलिमेंट्स. यहाँ की रब से फरियाद. हाँ, तो क्या आएगा सबसे पहले? लिथियम. हाइड्रोजन. हीलियम नहीं, यही तो दिक्कत हो जाता है ना. हे लीना करे रब से फरियाद करिएगा तो हे में आपको हीलियम याद आएगा, हाइड्रोजन होता है. एच लीना करब कसफर, एच ली नक रब कसफर, एच लीनक रब कसफर. So this is hydrogen, this is lithium, this is sodium, potassium, rubidium, then this is going to be cesium, and this is francium. This is francium. Atomic number की अगर हम बात करें, then hydrogen is going to be 1, lithium is going to be, lithium कितना हो जाएगा बताइए? 3. Sodium is 11, potassium is 19, 37, 55 and 87. Electronic configuration for hydrogen, it is going to be 1s1. For lithium, it is going to be 1s1 and 1s2 and 2s1. 1s2 and 2s1, sorry. For sodium, अगर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे अब, we are going to write now neon. Neon में 10 आ गए, 3s1. उसके बाद पोटेशियम में आर्गन आ गया, आर्गन में 18 and then 4s1. Then rubidium. आर्गन के बाद क्या आता है? आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन में आ गए 36 and 1 remaining, तो 5s1. Then सीजियम में क्या आ गया बताइए? जेनॉन आ जाएगा क्रिप्टॉन के बाद, and then here it will be 6s1, and उसके बाद रेडॉन, and then this will be 7s1. Understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है? Yes, अब sir. यहाँ पे देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या लिखा है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Now, general electronic configuration is what? देखिए, this is in
अगर हम यहाँ पे पीरियड नंबर लेते हैं, क्या रखते हैं? पीरियड. दिस इज द फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, fifth, sixth, and seventh. The period number is also giving you what? The period number is also giving you the principal quantum number 2, 3, 4. देखिए सेम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So general electronic configuration is going to be outermost जो होगा NS1, where N is the period number. N is the period number. And tell me what will be the valency? Valency क्या हो जाएगा बताइए? What will be the valency? अरे बोलो भाई. The balance sheet 8 minus balance 8 minus 1 कितना होगा? 7 7 बड़ा या 1 बड़ा? 1. 1 बड़ा. Oh sorry. 7 बड़ा. Oh my God, सारा कुछ खा पी के आई है क्या आज आप? हाँ सारा. सारा कैसे? कुछ खा पी कर आई है क्या? नहीं ना. हाँ तो फिर क्या बोल रही है आप? 1 बड़ा होगा. 1 is smaller ना, so whichever is smaller we take that as valency. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैलेंसी. सो वैलेंसी इज गोइंग टू बी 1. समझ में आई बात सबको? yes or no please tell me. चलिए वैलेंसी से पहले चलिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं. आप लोग ये तो पागल होते रहिएगा बिल्कुल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? आउटर मोस्ट शेल 2, 1, 3, 1, 4 में भी 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस. वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इक्वल टू 1. और वैलेंसी, वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? वैलेंसी भी 1 हो जाएगी. खापो जल्दी, खापी जल्दी. 27 हो रहा है हमारा. 28 बस. हम गिनेंगे 5. लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट और आगे. 5, 4, 3, 2, 1. चलिए सेकेंड, ग्रुप 2 एलिमेंट्स. व्हाट डू वी कॉल ग्रुप 2 एलिमेंट्स? टेल मी गाइस, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स को? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. नाउ कौन बताएगा ग्रुप 2 एलिमेंट्स? जल्दी बताइए कौन बताएगा? किसको याद हुआ है? किसको याद हुआ है? काशिफ वाशिफ किसको याद हुआ? नहीं हुआ? डेटा मांगे हम्म. डेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि. हाँ तो कैसे लिखे बताइए पहला वाला? BE BE MG MG CA CA SR SR BARA. BARA. सिद्दीका आपको याद नहीं हुआ अभी तक? No sir. क्यों नहीं याद हुआ आपको? दो तो देखिए, सारा याद करना चाहिएगा, नहीं याद होगा सही. कम से कम कुछ तो याद कर लेते. एक तो याद हो सकता था ना सिद्दीका? एक भी नहीं याद हो सकता था? बेमत का सर बड़ा इतना था. मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, फ्रांशियम, बेरियम, रेडियम. ट्राई किया कि नहीं ट्राई किया आपने? तो देखिए पीरियड नंबर अगर हम लिखेंगे तो बेरिलियम विल बी इन द सेकंड पीरियड, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद नीचे आ जाता है. आप अगर देखेंगे पीरियोडिक टेबल, दिस इज 3, 4, 5, 6 and 7, and this is also visible in the electronic configuration. Beryllium is 4. Magnesium कितना होता है? 12, 20 and 18, 38, 38 and then will be 56. 56 के बाद आ जाएगा 88. ठीक है. So if I'm going to write the configuration, this is going to be 1s2, 2s2. उसके बाद आ जाइए नियॉन 3s2, then हे नियाज अरे 4s2, करो 5s2, Xerox 6s2 and रंगीन 7s2. ठीक है. व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? टेल मी गाइस, बताइए क्या हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NH2. बोलो NS2. एंड व्हाट इज द वैलेंसी?
नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए पहले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2. 2, और वैलेंसी? 2. वैलेंसी क्या होगी भाई? 2. 2। सबको समझ में आ रहा है? सिद्दीका, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है ना? Yes, यासिर, sir. काशिफ, Yes, sir. यासिर और काशिफ, आप लोग बताएं, आपकी आवाजें नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है? वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक है, चलिए। अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब आ जाइए आप लोग वापस से एस ब्लॉक एलिमेंट जहां पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इट इज गोइंग टू बी एन एस होता है आउटर मोस्ट में, एंड द एस सबशेल कैन आइदर हैव 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ऐसे लिख देंगे एन एस 1 और 2, 1 to 2। एक से एक या दो होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। लिख सकते हैं? हाँ यहाँ जल्दी बताएं। यू कैन राइट डाउन ना, ये सुनो, Yes, sir. जल्दी लिख लीजिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। लिखिए आपने? हाँ यहाँ जल्दी बताएं। Yes, sir. अब आ जाइए आप, हम लोगों ने क्या किया था? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। राइट, इट इज कंपोज्ड ऑफ 6 groups as the p subshell can have maximum of 6 electrons. Can have maximum of 6 electrons. ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम ग्रुप 13, या फिर किसी किसी टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिखा रहेगा 1 2 3 ए, और इट विल बी 3 ए। ठीक है, ग्रुप 13 को क्या क्या लिख सकते हैं? ग्रुप 13 का 2 ग्रुप 18। ग्रुप 18 को कैसे लिख सकते हैं? इट विल बी आइदर 5 1 1 1 8 और 8 ए, और इस तरह से 8 ए। ठीक है, बट जनरली वी आर गोइंग टू रेफर इट एज ग्रुप 13 एंड ग्रुप 18। कहीं पे सी एच सी आ गया तो आप लोग घबराइएगा, मतलब ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। जैसे आपके पास जो ग्रुप, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, इट हैड ओनली मेटल्स, बट इट कंटेन्स द पी ब्लॉक एलिमेंट, इट कंटेन्स, राइट, इट कंटेन्स मेटल्स। पहले लिखे नॉन मेटल्स, इट कंटेन्स नॉन मेटल्स, कॉमा मेटलॉइड एंड मेटल्स, एंड मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट, elements above metalloid are non-metals, and below metalloids are, क्या हो जाएगा बताइए? अगर above metal नॉन मेटल है, above metalloids it is non-metal. Elements above metalloids are non-metals, so elements below metalloids are Metal. Metals. metals, है ना? इतना कम से कम दिमाग ऑन रखें आप लोग। अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि मेटलॉइड्स कौन से हैं, तो फिर हम लोग आगे भी बता सकते हैं। ठीक है, प्लीज राइट मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन कौन से? बोरॉन के बारे में आपको नहीं पता अभी, ठीक है? बोरॉन है, बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने देखे ना, देखिए लुक एट द पीरियोडिक टेबल दैट वी हैड यस्टरडे। इसमें देखिए ये जो ग्रीन वाले हैं ना,
boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium. These all are considered to be what? These all are considered to be metalloids. ठीक है. But if you are going to look at the NCERT textbook, तो वहाँ पे बोरॉन को शायद उन्होंने नहीं कंसिडर किया. But we are going to keep boron and in brackets. Silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium. ठीक है. आगे बढ़े या नहीं बढ़े, बताइए, जल्दी बताइए. Yes, sir. अब इसमें सबसे नंबर 1 आ जाएगा ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ये फैमिली है बोरॉन की, बोलते हैं बोरॉन. अरे देखिए, यही मुझे ना बहुत ही तकलीफ होती है, हम नहीं जाएंगे तो सॉरी, आप मेरा फ्लो नहीं ब्रेक कर सकते, सॉरी. ये आपको पहले बोलना चाहिए था जब हमने पूछा था लिख लिया या नहीं. चलिए लिख लिया ना. ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन बताएगा? बोरॉन फैमिली स्टार्टिंग विद बी. Sir, is it that wagon wala? हाँ बैगन हो गया ना. तो बैगन, Okay. Wagon, आलू, aloo, gajar, गाजर, इन in khera. थैला. हर्षा आपको भी नहीं याद हुआ क्या? हर्षा, Then I just memorized few. you have memorized few only. Okay. Boron, this is aluminium, this is gallium, this is indium, this is thallium. Okay. If I talk about the period, here, then boron is going to be in which period? The second period. This is in the third, fourth, fifth, and sixth. If I talk about the atomic number, then boron is going to be atomic number 5. Aluminium is how much? 13. Gallium is uska ulta 31, 49, and thallium is going to be 81. Okay. Now next we are going to write the electronic configuration. So boron के लिए क्या लिख देंगे? 1s2, 2s2, 2p1. Then from aluminium we can start with neon. Neon आ गया 10 और 3s2, 3p1. Then gallium में क्या आ जाएगा बताइए? gallium में आ जाएगा आपके पास argon. Argon 4s2, 3d10. अब उसके बाद आएगा 4p1. ओके. सिमिलरली आर्गन के बाद क्रिप्टॉन 5s2, 4d10 and 5p1. सिमिलरली थैलियम तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो xenon आ जाएगा, and in xenon we are going to write starting with 6s2, 4f with 14 and then 5d10, 6p1. So from here we can write the general electronic configuration. It is going to be what it is going to be. सब में क्या देखिए? ns2 and np1. Look at the n. ns2 np1, ns2 np1. Now ns2 सब में है और np1 भी है. n का मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला है. So then you are going to write the valence electron. Valence electron is going to be how much? See here the, if I look at the valence electron बताइए सब में कितना? चैट में बताइए जरा, आप लोग दिमाग लगाइए, बैठ के बस देख रहे हैं आप लोग. What is the valence electron mean of the case? Tell me guys. Look at the valence shell और उस तरह से पता चल जाएगा वो. ये हर्षा करेक्ट. बाकी लोग को नहीं दिख रहा है? सारा, सिद्दीका, यासिर, काशिफ, मार्टिन, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है? जल्दी बताएं नहीं दिख रहा हो तो. Tell me quickly ना. I will give you hints then. No, sir. हाँ, if you, किसने कुछ बोला माइक ऑन करके स्पेस दबा के प्लीज थोड़ा साफ साफ बोला करें, हमको समझ ही नहीं आया क्या बोला किसी. सिद्दीका ने बोला, पता नहीं सारा ने बोला. If you have said something, keep your mic on until and unless I have responded to it. सिद्दीका ठीक है. सारा आपने बोला था, नहीं समझ में आया क्या बोला था आपने? आपने बोला था, सिद्दीका ने बोला था, किसने बोला था? Sir, hint.
हिंट देखिए, डिड आई रिप्लाई टू यू सारा? आप हाँ, तो माई कॉन्टेक्ट है, यू सेड हिंट राइट? Yeah. ठीक है, व्हाट इज द बैलेंस? कोई एक एलिमेंट चूज कर ले फ्रॉम द Uh, फैमिली बोरॉन. व्हाट इज द बैलेंस शेल? बैलेंस Three. शेल कौन सा? विच वन? 2s and 2p. हाँ, बैलेंस शेल इज सेकंड शेल. बैलेंस शेल कौन सा है? Second shell. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सेकंड शेल? 2. One second. How many electrons are there in the second shell? How many subshells are there? Second shell में कौन कौन से सबशेल यूज हो रहे हैं बताइए? 2. सबशेल में पूछ रहे हैं हम, सारा ध्यान से सुन ही नहीं रही बात को. कौन कौन से सबशेल हैं सेकंड शेल के? कौन कौन से सबशेल हैं? S. बस ऐसे है और कुछ नहीं है सेकंड S शेल and में. P. 2s and 2p. कितने इलेक्ट्रॉन से टोटल उसमें? 3. तो व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 हो गए. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 3 हो गए. Yeah. चूज एनी वन, कोई दूसरा चूज करें. Aluminium. एल्यूमिनियम. ठीक है, नहीं एल्यूमिनियम नहीं, आप चूज कीजिए इंडियम. इंडियम देख लिया आपने? इंडियम देख लिया? प्लीज कीप योर माइक ऑन सारा. थैंक यू वेरी Yes, मच. sir. व्हाट आर दी वैलेंस, व्हाट इज द वैलेंस शेल इंडियम में? 5. 5. व्हाट आर द सबशेल्स इन दैट फिफ्थ शेल? कौन कौन से सबशेल आ रहे हैं? S and P. 5s एंड 5p है ना, s and p. कितने इलेक्ट्रॉन से टोटल उनमें 5s 3. 5p में मिला? 3. कितना हो गया वैलेंस शेल? 3. उसके बाद बताइए वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी भी? वैलेंसी इज गोइंग टू बी आल्सो 3 बिकॉज़ 8 - 3 is 5. 5 will be greater, तो जो छोटा होता है उसी को वैलेंसी लेते हैं, तो 3 हो जाएगा. Got this? Yes or no, please tell me. Yes, sir. I'm again going to wait for 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. ठीक है, एलिमेंट्स में मुझे पता नहीं क्या हो चुका है मेरे. राइट नेक्स्ट. ग्रुप 14 एलिमेंट्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली. क्या बोलते हैं इनको हम? कार्बन फैमिली. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी कैसी गीत सुनाओ प्रभु. कैसी गीत सुनाओ प्रभु is going to be carbon, silicon, germanium, silicon, germanium. We are going to have tin, and then you are going to have lead. Carbon is atomic number 6, 14. Germanium is going to be 32. Tin is going to be 50, and lead is going to be 82. If I talk about the periods here, this is going to be second, third, fourth, fifth, and sixth. Okay. We're going to write the electronic configuration for all of these. I'm going to write the general electronic configuration. Electronic configuration इसमें हो जाएगा आपके पास NS2 and NP2. You can also see the valency here, valence electron. Valence electron यहाँ पे कितने हैं? 2 और 2 4. Now 4 from valence electron or 8 minus valence electron, it is going to be the same 4. तो valency कितनी हो जाएगी इसकी? Valency for this is going to be 4. ठीक है. So this way we can write for each and every group, and that is going to be your homework. ठीक है. Homework. In similar way. What about the third series? 3D third series क्या?
Sakti Vacuum and Frequent. That one. शक्ति 3D सीरीज जो है वो डी ब्लॉक Yeah. एलिमेंट्स उतने ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग इसमें मेन ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा पढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएगा स्पेशली इन द 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, उस टाइम उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, अभी उनको बस आपको जानना जरूरी है। तो यू हैव टू जस्ट डू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ओके, इन सिमिलर वे कंप्लीट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। I hope since how much you have done? You have done 4, right? 2 here and 2 here, right? And how much is remaining? 4 और बच रहे हैं, ठीक है, तो 4 आपका होमवर्क हो जाएगा। You must have a good idea how much space to leave. आप उतनी जगह छोड़ दीजिए, उसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, a small bit of things regarding D block elements and the F block elements, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, next लिखिए D block elements। General electronic configuration. This is going to be NS2 and N-1. NS2 meaning NS में 1 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्रोमियम और कॉपर का हम लोगों ने देखा है। Sometimes there are 0 also, ठीक है। Sometimes there are 0 also. इसमें general electronic configuration 0 to 2 ये इतना important नहीं है, but the important thing is N-1 D and this D can have 1 to 10 electrons, ठीक है। So N-1 D NS 1 0 to 2 और N-1 N-1 D 1 to 10 electrons can be filled. Right, next. So what is the general electronic configuration for P block? वो आप जब लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एस ब्लॉक का हो गया ना, अगर आप यहाँ स्टार्ट करेंगे ना तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगेगा आपका। इट इज स्टार्टिंग NS2 सब में आ रहा है, देखिए ग्रुप 13 में भी NS2 है ना, ग्रुप 14 में भी NS2 है। सो व्हाट इज चेंजिंग? ओनली NP1 NP2 NP3 4 5 6 तक आएगा, राइट। Yes, sir. NS2 NP क्या हो जाएगा? 1 to 6 हो जाएगा। ये हम सोचे थे आप लोग से, आप लोग करके आइएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूछेंगे। अगर आपने पूछा तो हमने बता दिया। NS2 से NP 1 to 6 it will be there, okay. Okay. Now for D block elements it is NS0 to 2 and N-1। और यहाँ पे देखिए NS1 0 to 2 हमने लिख दिया है, कहीं किताबों में आपको NS2 भी मिल जाएगा, N-1 D 1 to 10 भी मिल जाएगा, ठीक है। सो इसमें अपनी बहस करने की जरूरत नहीं है। दिस आर नॉट मतलब सो उतना फिक्स नहीं है। और प्लीज ध्यान रखें, आपको खुश होना चाहिए जब भी आपको कोई चीज फिक्स ना मिले किसी सब्जेक्ट में, दैट मीन्स पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट, और आप सब्जेक्ट को उस स्टेज में पढ़ रहे हैं जब ये अभी बच्चा है, तभी तो चीजें फिक्स नहीं है। अदरवाइज मैथ में एवरी 0 से लेकर 9 तक होता है, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, राइट। दैट मीन्स मैथ इज ऑलरेडी सेटल्ड। व्हाट यू आर लर्निंग इज अ न्यू साइंस, ठीक है। दैट इज व्हाई थिंग्स आर नॉट सेटल्ड हियर, अभी भी बातें चल रही हैं इसके बारे में, ओके। सो दैट इज व्हाई इन केमिस्ट्री यू आर गोइंग टू फाइंड मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट वेरी मच सेटल्ड। उसके बारे में हम बोलेंगे, ज्यादा बहस करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी जो एक्सपर्ट्स है वही इन मामलों को सेटल नहीं किया उन्होंने, ओके। चलिए मूविंग ऑन। आफ्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर गोइंग टू राइट these are called transition elements और metals भी बोल देते हैं transition metals और transition elements। इसलिए देखिए the D block has 3 rows। पहले वाले को बोलते हैं 3D सीरीज, सेकंड को बोलते हैं 4D सीरीज, बिकॉज उसमें 3D में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो 3D सीरीज, 4D में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं सीक्वेंशियली तो 4D सीरीज, और 5D सीरीज।
ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज इसके अगर हम मान लें, राइट, नंबर 1, they have high melting point and boiling points. Secondly, high melting except, लिख लीजिए, except Hg. Hg is what? It is liquid in room temperature. ठीक है, except Hg. Second लिख लीजिए, they form Sir, what is it colored, written after high? what? Written after 5. No, properties high. Melting point and boiling point. Okay. MPT and BPT. ठीक है, they form colored compounds. They show variable oxidation state. Variable oxidation state, oxidation state जो word है ना, इसको आप अभी हल्के के लिए क्या मान लीजिए, वैलेंसी ही मान लीजिए, हम लिखाएंगे नहीं वैलेंसी, बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली वैलेंसी, बट वैलेंसी इज द क्लोजेस्ट थिंग दैट वी हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट टिल नाउ. ठीक है, थर्ड में फोर्थ लिख लीजिए, यूज्ड एज कैटलिस्ट. Catalysts are things that are used in reaction to make it fast. Reaction को जल्दी कराने के लिए we use catalyst. लिखिए आप लोगों ने SNOP चलनी. Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा F ब्लॉक के बारे में लिख लेते हैं. Sir, in D block, how can NS be 0? वो कुछ एलिमेंट में ना हो जाते हैं. ठीक है, जैसे NS1 हो जाता है ना क्रोमियम और कॉपर में. Yes, sir. ठीक है, तो उसी केस में अब these things are so minute कि इसमें कोई लॉ बनाना, it is almost like inviting criticism because things are very small ना. अब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से नहीं रह के, एक सेक्शन से नहीं रह के दूसरे सेक्शन में चला जाए, क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना. द एनर्जी डिफरेंस इज आल्सो वेरी मिनिमम. ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी आर लर्निंग. ठीक है, तो और वहां पे इनएक्यूरेसी होने की कितनी चांसेस है, बिकॉज वी आर लर्निंग थिंग्स विच आर ऑफ एंगस्ट्रॉम रीजन. और एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 to the power minus 10 meters. We are talking about things which are so small, 10 to the power minus 10 meters. There is nothing which you study which is so small at this level. Even if you are studying biology, biology are made up of macromolecules. और जब macromolecules रहता है, they are not in terms of angstrom, वो फिर और they are a bit larger. वो फिर 10 to the power 3, 10 to the power minus 6. ठीक है, माइक्रो वाले के रेंज में आ जाते हैं. What we are learning about it's 10 to the power minus 10 meters. Okay, obviously inaccuracies होंगे. और समझ में आ रही है आपको हर्षा? Yes, sir. ठीक है, तो हमने ना सब्जेक्ट से लड़ना नहीं. ठीक है, आप ऐसे लड़ नहीं रही, लेकिन एक चीज हम बता दे रहे इन जनरल बच्चों को कि सब्जेक्ट से लड़ना नहीं है, इन द सेंस कि मतलब ऐसा क्यों होता है ना. फॉर सम थिंग्स, फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों, मतलब ऐसा होता है, इस वजह से होता है. बहुत सारी चीजों का आंसर है केमिस्ट्री के अंदर. we still don't know what is the reason. ठीक है, सिंपल सी बात. चलिए, ऐसे एक बच्चा था हमारे पास जब हम बीएससी पढ़ रहे थे. सो उसमें क्लास में एक बच्चे ने बोला, सर लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो ऐसा होना चाहिए. सर ने बोला ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसा तू सोच रहा है ना, ऐसा होता ही नहीं है. तो क्या होना चाहिए उस पर अभी बहस हो ही नहीं सकती है. लॉ की वजह से सी, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना, 2-3 एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया, उसके बाद उन्होंने लॉ बना दिया. ठीक है, अब लॉ की वजह से थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट आया है, लॉ की वजह से थोड़ी ना रिजल्ट आएंगे. रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंट जो होगा, अब आगे का जो एक्सपेरिमेंट होगा, वेदर इट इज फॉलोइंग दिस लॉ और नॉट फॉलोइंग दिस लॉ, उस एक्सपेरिमेंट को रियलिटी से क्या लेना देना. पूरे दुनिया को, यूनिवर्स को जो वर्क कर रहा है, क्रोमियम को क्या लेना देना ऑफ बॉब प्रिंसिपल से. क्रोमियम को क्या लेना देना हंट्स रूल से, मैक्सिमम मल्टीप्ली. क्रोमियम तो हंट्स रूल और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और ऑफ बॉब प्रिंसिपल सबसे पहले आया हुआ है, राइट. इट इज
देयर इवन बिफोर दैट। ठीक है, तो क्रोमियम फॉलो नहीं करता, ये गलत बात है, बोलेंगे क्रोमियम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा साइंस को देखने का नजरिया बदलेंगे कि लॉ के बाद नहीं है, लॉ से पहले भी कुछ था, एक्सपेरिमेंट उसकी वजह से लॉज बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन एफ ब्लॉक एलिमेंट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम देखने वाले हैं इज, इसमें भी NS012 हो सकता है। ठीक है, उसमें ज्यादा बहस नहीं करेंगे। इसमें अगर 2 भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से 2 भी लिख दे तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। देन यू विल हैव N-2F and this F will be filled, so that is why it is going to be 1 to 14, है ना। अब यहाँ पे आपके पास N-1D भी होता है कभी कभी, which is what 0 to 2। ठीक है, कभी कभी F में ना जाके D में चल जाता है, उसके बाद F में आता है। ठीक है, so उस पे बहस नहीं, but this is the general electronic configuration of the F block elements. We will write next. It is composed of two rows. एक को बोलते हैं एक्टिनाइट्स, एक को क्या बोलते हैं, पहले नहीं, पहले लैंथेनाइट्स आता, लाएंगे एसी ना, तो लैंथेनाइट्स लीजिए पहले, लैंथेनाइट्स, लैंथेनॉइड्स। ठीक है, और इसको लैंथेनाइट्स भी बोल देते हैं, लैंथेनाइट्स। ठीक है, और लैंथेनाइट सीरीज कुछ भी बोल दीजिए आप इसको। ठीक है, दिस इज AKA रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और ये स्टार्ट होता है सीरियम से लुथेनियम तक। सीरियम इज आई थिंक 58 एटॉमिक नंबर, 58 से 14 8 71 LU। ये चीजें याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मार्क्स आ गया, 1 मार्क्स सवाल आएगा, आगे कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना, 1 मार्क्स कट जाएगा आपको। तो छोटी सी इतनी सारी चीजें याद करने की आपको जरूरत नहीं। Until unless you have got a very extremely great mind, then I'm not stopping you to memorize these things also. Actinides and actinides. Okay. Now, ये इसमें these are radioactive. Radioactive. मोस्टली जो एक्टिनाइट सीरीज में या फिर एक्टिनाइट सीरीज में है ना, दीज आर लाइक 100 से अबव जो है आपके पास, नहीं यूरेनियम से ऊपर जो है 92 से ऊपर, दे हैव बीन इन अर्थ ओनली फॉर लाइक माइक्रो सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद खत्म हो गया। बट वही है, अगर आप जाके नाम देखेंगे ना, तो नाम में आपको मिलेगा अमेरिकम, प्लूटोनियम, ठीक है, क्यूरियम, बर्केलियम, बर्कली, यूसी बर्कली, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया, एनस्टाइनियम, फर्मियम। ठीक है, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। ठीक है, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट, ये सारे के सारे क्या है, कोल्ड वार के एलिमेंट्स है। ठीक है, these were invented by men, they remained in the earth only for like 10 to the power -9 seconds। बस इतना ही, बस इतना एलिमेंट ये कर लिया, कितने प्रोटॉन्स है इसमें, दैट्स इट। ठीक है, these are present between कहाँ से कहाँ तक है, थोरियम दैट इज 90 से लेके लॉरेंशियम दैट इज 103। ठीक है, these are from these things. और लिख लीजिए पॉइंट, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। अब ये सारी चीजें नाम है बस, अब 1 मार्क्स में कोई टीचर आपसे पूछ दे व्हाट इज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, और मतलब छोटा सा डेफिनेशन है 1 मार्क्स का, तो आपको बाद में बहुत अफसोस होगा, इस वजह से हमने लिखा दिया। लिखेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स exhibit variable oxidation state। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपके पास एक और होमवर्क जो आप NCERT टेक्स्ट बुक में देख लेंगे, या फिर आप आराम से देख सकते हैं किसी भी दूसरे बुक में, लिमिटेशन ऑफ
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। So how much space should we leave? Like 3-4 लाइंस तो नहीं, 5 लाइंस छोड़ दीजिए आप, 5 लाइन उसके अंदर तो आ ही जाएगा। There are basically 2 main limitations, लेकिन किसी बुक में थोड़ा ज्यादा भी दिया रह सकता है, तो सब बोलो 5 लाइंस, लीव 5 लाइंस। डन, यस नो प्लीज टेल मी। ठीक है, अब आगे लिखिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देख रहे हैं, आई एम नॉट इवन टचिंग इट, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया यार। ठीक है, प्लीज राइट पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, right here. Now, what does this mean? Periodicity of properties is right a repetition of similar properties after certain interval, after certain regular interval. ठीक है, इसी का मतलब होता है periodicity। आफ्टर सर्टेन पीरियड वापस से वही चीज आ गई, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वही वापस से वही चीज आ गई, तो उसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी, बोलते हैं पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट लिखिएगा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉज ऑफ periodicity. Now the main cause of periodicity is that, आपने अगर देखा होगा हम लोग ग्रुप नंबर जब कर रहे थे, देन इन दैट ग्रुप नंबर व्हाट इज हैपनिंग, द outermost shell electronic configuration it is what it is same, और रेगुलर इंटरवल के बाद वही चीज आ जा रहा था। ठीक है, सो प्लीज राइट नंबर 1, ड्यू टू same outermost electronic configuration, coming at regular intervals। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा एलिमेंट्स विथ क्या लिखना है भाई आपको, एलिमेंट्स विथ लिख लीजिए, एलिमेंट्स विथ
similar properties, elements with similar property occur at intervals of, जो नोबल गैस का है ना, मैजिक नंबर हमने बताया था क्या था भाई, 2,8,8, उसके बाद 18, 18, 32, ठीक है। इस नंबर को बोलते हैं मैजिक नंबर्स, ठीक है, मैजिक नंबर्स। लिख के सबने हाँ या ना जल्दी बताएं। Yes, Is there sir. anyone who is still writing? Is there anyone who is still writing? Is there anyone who is still writing? No. No, right. अब जो प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है, what are those properties? Please see. First, we have to learn about effective nuclear charge. Effective nuclear charge. पढ़ेंगे हम लोग क्या बारे में? Effective nuclear charge. Now we call this simply Z effective. Z, that is the nuclear charge, and effective means जो effective होगा. Now next we have to learn about the atomic radius. Then we have to learn about atomic radius, ionic radius, इसी में आ जाएगा. After this, we have to learn about ionization enthalpy. Enthalpy is nothing, it is energy measured at constant pressure. ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखें, जब एनर्जी मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एंथैल्पी. आफ्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी का साइन होगा डेल्टा एच और यहाँ ब्रैकेट में आई. दिस विल बी फॉर व्हाट? दिस विल बी ओनली फॉर मेटल्स. इसको जो लोगों ने पढ़ा था, दिस वाज फॉर मेटल्स. Similar thing for non-metal was electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. This is shown by delta H Eg. और ये किसके लिए? For non-metals. Then we are going to learn lastly about electronegativity. And we are going to learn about electronegativity. This will be for covalent molecules and it is denoted by chi. किसके लिए होगा ये? For covalent compounds. For covalent compounds. चलिए बिल्कुल बढ़िया से लिखिए इसको. So whenever we are going to talk about properties, these are the 5 properties which determine the property of an element. Element कैसा behave करेगा? It is determined by these properties. Please write here.
behavior of element is determined by the above mentioned properties. Is everyone done? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिएगा. सबसे पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Effective nuclear charge. We denote this by Z effective. इस तरह से. ठीक है, पहले इस बात को समझ लीजिए. Then we are going to write about this. ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा जरा. Let us suppose this is your nucleus. First shell, second shell, and then you are having the third shell. ठीक है. So first shell में we have only 2 electrons. Second we have maximum of 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Then after में आप मान लीजिए आपके पास you have 1 electron in the third shell. ठीक है. Now, please tell me. We are only going to talk about this last electron. Why? Because outermost electronic configuration. तो outermost जो electron है that is useful और उसी के बारे में बात होगी सर. इसके बारे में outermost electron के बारे में बात होगी. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. outermost के बारे में, अंदर के बारे में बात नहीं होगी, outermost के बारे में. एक आपके पास सिनेरियो ये है. Let us suppose that this has a positive charge. Nucleus के पास क्या positive charge होता ही है. And it is having 11 protons. तो 11 positive charge हो जाएगा. They will be having 11 positive charge. Oh, sorry. Please see. You'll have 11 positive charge. ठीक है. Now let us suppose we have a similar scenario in which you have a proton. This proton is also having 11 positive charge, but यहाँ पे जो electron है सीधा आप कहाँ पे है? It is in the third shell. Okay, it is in the third shell. बीच में कोई भी इसके electron है नहीं. There is no electron in between the proton and the nucleus. So we have a scenario A where we have electrons. Where we have electrons between the outermost electron, the valence electron, or nucleus के बीच में there are some electrons. In the second case B, we don't have any electrons between the nucleus and the outermost electron. Now tell me, where will be attraction more, positive or negative? So electron negative charge होता है and proton is positively charged. What do you think where are you going to have more attraction? Attraction कहाँ ज़्यादा होगा? A केस में या B केस में कहाँ पे attraction ज़्यादा होगा? What do you guys think? ये कोई सही गलत नहीं आंसर है, आप बस रीजन से आंसर दीजिएगा. ठीक है. It is more attraction, right? चैट में हाँ, प्लीज आंसर The द चैट. question is which Chat, has chat. attraction. हाँ, correct. Which is going to, in which scenario electron is going to experience more attraction? In which scenario electron is going to feel more attraction? ठीक है. बस देखिए आप लोग आंसर जो करेंगे ना वो आपके कोई लॉजिक हम पूछेंगे, वाई भी पूछेंगे आप लोग से. ठीक है ना. ओके, सारा, हर्षा एंड मार्टिन हैज आंसर्ड. बाकी लोग आंसर करें जल्दी. काशिफ, यासिर, सिद्दीका, प्लीज आंसर क्विकली. ओके, यासिर एंड काशिफ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? यासिर और काशिफ नहीं है क्या क्लास में? देखिए ये सब बनाने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर राइटिंग दिस डाउन, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू गाइस. ठीक है, समझने के लिए ये चीजें. यासिर एंड काशिफ, इट सीम्स दे आर नॉट प्रेजेंट. ठीक है. all of you have said that B केस में attraction ज्यादा होगा, and the answer is quite also obvious because जब इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे then
these electrons will be hindering the force of attraction that is exerted by the positive charge. ठीक है? In reality में तो B case का कुछ होता नहीं है. Case of elements, right? But comparison के लिए हमने बता दिया. That means जो B case था आपका, please listen very carefully. In the B case, the outermost electron was experiencing all the positive 11 charge. Yes or no? Please tell me, guys. Correct है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? But in the that was ideal case. जो real case है A, in this we are experiencing a less charge. We are not experiencing, the outermost electron is not experiencing the complete 11 positive charge that is present in the nucleus. That means कुछ वो कम experience कर रहा है. It is experiencing a bit less. And it is experiencing a bit less of attraction because of these inner shell electrons. Because these inner shell electrons, they will also exert a repulsion. एक तो attraction है, लेकिन थोड़ा वो दूर भेज देंगे because there is repulsion between the electrons. And this is known as shielding. Or screening. ठीक है? What these electrons are doing, they are screen. वो एक screen बन गए. If they are not present, we are going to experience the complete 11 positive. But they are present, तो वो shield कर रहे हैं. They are shielding the effective. They are shielding the nucleus. They are shielding the forces of attraction. That is why इसी को क्या बोलते हैं? Screening or shielding. What do we say? It is screening or shielding. अब यहीं पे देख लीजिए. Please see. Now, this outermost electron, it is going to experience some nuclear charge. It is going to experience some nuclear charge, which will call Z effective. जो पहुंचता है उसके पास, which will be equal to the complete positive charge that it had, that is equal to the nuclear charge, that is equal to the number of that is equal to the number of protons, which is equal to the atomic number, minus, we call it sigma, जो किसको represent करता है? Shielding को. सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शील्डिंग. So it is going to experience less than the actual positive charge present in the nucleus. Is this clear? Yes or no? Please tell me. यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? हाँ या ना? जल्दी से छापे इसमें जो भी छापने को आपको मन कर रहा है. ठीक है? And then we are going to write what is shielding or screening. Is my voice audible properly? या फिर कुछ गड़बड़ आ रहा है? बताइएगा. It's a bit आवाज आ रही glitchy. है? It's a bit glitchy. There can be a bit glitches here and there because हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई, लाइट वेट है, इंटरनेट इस वजह से लास्ट क्लास तो हमको कैंसिल करना पड़ा आधे में. I could not complete the 6:30 class Indian time. You are right here, shielding or screening. Okay, please write with me. The reduction in nuclear charge. So your screen is stuck. Wait a second. Is my screen visible or it is not visible? It is visible, but No, the thing you are writing now. It's not. Achha, I mean, there is nothing. Okay. So,